Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो Good ये morning, sir. okay. This Good morning, meeting sir. this this meeting is being recorded और जो आज की क्लास है फ्यूचर में भी they will all be uploaded on the institute website. So okay, we are starting the anatomy class for BPT first year. The topic under study today is the knee joint. We had earlier started the knee joint and we'll continue from where we left last time. चलो, आप लोगों को याद है हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट टाइम? नी जॉइंट हमने शुरू कर दिया था, Sir, ligamentum pateli. लिगामेंटम पेटेली तक हमने कर लिया था ना, तो उससे आगे चलते हैं. आपको मैंने डायग्राम भेजे थे, आपको याद, देख लिए थे आपने डायग्राम? आपको कुछ डायग्राम भेजे थे, एक तो लिगामेंटम पेटेली का था, एक लास्ट टाइम भी मैंने भेजे थे जब हम लोगों ने शुरू किया था. और आज हम जो सेकंड लिगामेंट जो जो कर रहे हैं, दैट इज tibial collateral ligament. Tibial collateral ligament or the medial ligament or medial ligament. अगर आप उस डायग्राम को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो लिगामेंटम ये tibial collateral ligament है, it extends from the medial epicondyle to the upper part of the medial surface and medial border and posterior surface of shaft of tibia. आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए. अनिल कुमार अपना वीडियो बंद कर दीजिए. और दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट और ये दो पार्ट्स में हो जाता है. जब अपर अटैचमेंट से निकलता है and then it gets divided into two parts. एक एंटीरियर और सुपरफिशियल पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर या डीप पार्ट होता है. जो इसका सुपरफिशियल या एंटीरियर पार्ट है, दिस इज अबाउट 10 centimeters long and it extends from the medial epicondyle to the shaft of tibia. और जो डीप या पोस्टीरियर पार्ट है, ये शॉर्ट होता है. इट्स अबाउट आई थिंक 1.25 सेंटीमीटर्स और ये ब्लेंड कर जाता है विद अ कैप्सूल. तो इसको लिख लीजिए. अच्छा, दिस लिगामेंट, किसी को याद है ये लिगामेंट की किस मसल का डीजेनरेटेड पार्ट माना जाता है मॉर्फोलॉजिकली? किस मसल का ये डीजेनरेटेड पार्ट माना जाता है मॉर्फोलॉजिकली? Sir, adductor magnus. Yes, that's Suman. Good answer, Suman. It is regarded morphologically as the degenerated tendon of adductor magnus. और ये शुरू होता है जो अपर अटैचमेंट है, it starts from the medial from the medial condyle just below the adductor magnus muscle. और इसीलिए adductor magnus तो बेसिकली adductor है, इसीलिए it is able to perform the function of flexion along with the other hamstrings. It is because of this tibial collateral ligament or the medial ligament. इसके बारे में लिख लीजिए. अब आप नोट्स ले लीजिए. tibial collateral ligament. This is a long band. This is a long band of great
strength. This is a long band of great strength. Next slide. Superiorly, it is attached. Superiorly, it is attached to the medial epicondyle superiorly it is attached to the medial epicondyle just below the adductor tubercle, just below the adductor tubercle. Next slide. Inferiorly, it divides into anterior and posterior parts. Inferiorly, it divides into anterior and posterior parts. Next slide. अब ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए एंटीरियर और सुपरफिशियल पार्ट, एंटीरियर और सुपरफिशियल पार्ट. It is about 10 centimeters long. It is about 10 centimeters long and 1.25 centimeters broad. .25 centimeters broad. And is separated from the capsule by one or two bursae. Next slide. It is attached below. To the medial border इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा और कर. It is attached to the upper part of medial border. Upper part of medial border and posterior part. And the posterior part of the medial surface
posterior part of the medial surface of shaft of tibia. Shaft of tibia. Full stop. It covers the inferior medial genicular vessels and nerves and anterior part of tendon of semimembranosus. And is crossed, CROSSED, and is crossed by or crossed below. It is crossed below by sartorius, gracilis, and semitendinosus. ये जो 3 मसल्स हैं जिनको SGS कहते हैं, या जैसे एनाटॉमी में हम लोग सब सीखते हैं, सिखाते हैं, आपको भी निमोनिक बताया था, अ गर्ल बिटवीन टू सरदार्स। ये तीनों कहाँ पे इंसर्ट होती हैं? ये एक ऑलमोस्ट एक ही जगह इंसर्ट होती हैं। किसी को याद है इन तीनों मसल्स का इंसर्शन कहाँ होता है? The anterior medial surface of the medial epicondyle, the anterior medial surface of tibia upper part से। हाँ, आयान पूरा करो। आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। आंसर आपका काफी हद तक करेक्ट। आपको याद होगा कि अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस, वहां पे ये तीनों का इंसर्शन होता है और ये तीनों मसल्स एक एक कंपार्टमेंट से आती हैं। sartorius comes from the anterior compartment, it's the gracilis which comes from the anterior, sartorius comes from the medial compartment, और semitendinosus comes from the posterior compartment। तो ये तीनों कंपार्टमेंट्स की मसल्स हैं जो यहाँ पे इंसर्ट होती है। और चौथा इंसर्शन जो हो रहा है वो है टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। और ये सब स्ट्रक्चर बहुत पास पे इनके अटैचमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लिख लीजिए पोस्टीरियर और डीप पार्ट। पोस्टीरियर और डीप पार्ट ऑफ the tibial collateral ligament, posterior or deep part of the tibial collateral ligament is short and blends with BLENDS, blends with the capsule and medial meniscus. Capsule and medial meniscus
meniscus, meniscus, medial meniscus, full stop. It is attached to medial condyle of tibia, medial condyle of tibia above the groove for semimembranosus. किसी को याद है ये वाला ग्रूव कहाँ है? यहाँ पे इंसर्शन होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस का. चलो, आपको याद होगा कि जब हम मीडियल कॉन्डाइल को पोस्टीरियरली देखते हैं तो अपर पार्ट में ग्रूव था, वहां पे इसका इंसर्शन होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस. नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए. मॉर्फोलॉजिकली the tibial collateral ligament, morphologically the tibial collateral ligament represents represents the degenerated tendon of adductor magnus muscle. और इसी लिगामेंट के थ्रू जो फ्लेक्शन एक्शन होता है एडक्टर मैग्नस का is performed along with the other hamstrings. Next, we move on to fibular collateral ligament. Fibular collateral ligament. जब हमने इंसर्शन पढ़ा था ना बाइसेप्स फेमोरस का on the back of the head of fibula, तो ये वाला जो लिगामेंट था वो स्प्लिट कर देता है उसके इंसर्शन इनटू टू पार्ट्स. देख लीजिए फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट. This is strong and cord-like. This is strong and cord-like. C-O-R-D. Cord-like. It is about 5 centimeters long. It is about 5 centimeters long. Next line. Superiorly, it is attached to the lateral epicondyle of femur, just above the popliteal groove. Just above
the popliteal groove. किसको ये ग्रूव याद आया? ये ग्रूव याद आया? लैटरल एपिकॉन्डाइल के जस्ट बिलो एक ग्रूव था ना, जिसका एंटीरियर पार्ट डीप था, पोस्टीरियर पार्ट शैलो था। वहां से कौन सी मसल का ओरिजिन होता है? Plantaris. सॉरी आयान? Sir, maybe this. एक सेकंड। अरे ट्रेन निकलती है तो बहुत आवाज करती है। हाँ आयान आप बताइए। सर वहाँ से सर पॉपुलेटियस मसल निकलती है ओरिजिनल। हाँ, अरे ये नाम बता रहा है, अगर अयान पिकअप कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं? नाम ही तो बता रहा है, पॉप्लिटियल ग्रुप। हम पूछे कौन सी मसल है, इमीडिएटली आपको याद आ जाना चाहिए इट इज, ये नाम क्यों दिया पॉप्लिटियल ग्रुप? इट इज बिकॉज ऑफ द ओरिजिन या अटैचमेंट ऑफ पॉप्लिटियस मसल। लाइक आपको बताता आ रहा हूँ, एनाटॉमी में जो नॉमेनक्लेचर है बहुत कुछ बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट लाइन। inferiorly it is embraced EMBRACED. It is embraced by the tendon of biceps femoris. It is embraced by the tendon of biceps femoris and is attached to the head of fibula in front of its apex. Next slide. It is separated from the lateral meniscus by the capsule and the tendon of popliteus. अगर इसको अब आप जब पढ़ेंगे तो इस डायग्राम को साथ में रखिएगा जो आपको दिए। आई होप आप लोगों ने वो जगह छोड़ी होगी बिफोर स्टार्टिंग टू राइट फॉर द डायग्राम्स। उन डायग्राम्स को आप इसी में ड्रॉ कर लीजिएगा जो जगह है। But the tendon of popliteus and the inferior genicular vessels and nerves separate it from
the capsule. Separate it from the capsule. Full stop. Morphologically, it represents the femoral attachment. It represents the femoral attachment of peroneus longus muscle. It represents the attachment of peroneus longus muscle. पांचवा ligament, 4 ligaments हो गए. This is the fifth one. Oblique popliteal ligament. Oblique popliteal ligament. This is an expansion. This is an expansion from the tendon of semimembranosus. From the tendon of semimembranosus full stop. It runs upwards. It runs upwards and laterally. It runs upwards and laterally and blends with the posterior surface of the capsule and blends with the posterior surface of the capsule and is attached to the intercondylar line and lateral condyle of femur. Next slide. It is closely related to the popliteal artery. It is closely related to the popliteal artery and is pierced by middle genicular vessels and nerves. Middle genicular vessels and nerves.
and the terminal part and the terminal part of the posterior division of obturator nerve. चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये जो टर्मिनल पार्ट है पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्टरेटर नर्व का, इसका क्या नाम है? हाउ डज दैट एंड? ऑब्टरेटर नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीजन है which supplies the obturator externus, adductor brevis if not supplied by the anterior division, adductor magnus, और फिर टर्मिनेट हो जाती है। किसी को याद? popliteal artery. नहीं, popliteal artery नहीं पूछोगे। posterior division of obturator nerve, ये किस नाम से हम लोगों ने पढ़ी है? चलो याद करो। देखो, आपसे मैंने पहले भी कहा, ये जो नर्व्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, बट आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में है ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं। जो छोटी छोटी नर्व्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनेट करती है एज द डिसेंडिंग genicular nerve, and it goes to the capsule of the Nigam. और जो एंटीरियर डिवीजन होता है वो टर्मिनेट करता है बाय एंडिंग इनटू द femoral artery। और ये पॉप्लिटियल आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? पॉप्लिटियल आर्टरी का ओरिजिन Sir, it is a continuation of femoral artery. वेरी गुड, जय, बिल्कुल सही। अरे यार, ये छोटी छोटी आप पढ़ो, यू हैव टू कंटिन्यू रीडिंग बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं। कहाँ से, हाउ डज इट, और किस पॉइंट पे इट बिकम्स द पॉप्लिटियल आर्टरी? वो वाला एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? apex of popliteal fossa. नहीं, हाइटस मैग्नस। हाइटस मैग्नस, यस। वो ओपनिंग होती है ना, जो टेंडनस ओपनिंग है इन द टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस, कॉल्ड एज हाइटस मैग्नस। वहां तक तो वो फेमोरल आर्टरी है। वंस इट क्रॉसेस दैट हाइटस मैग्नस, इट बिकम पॉप्लिटियल आर्टरी। सर, ऑब्टरेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन का क्या नाम बताया था आपने? मेरा डेटा कनेक्शन बेस प्रॉब्लम। जो इसका टर्मिनल ब्रांच है, जहाँ पे जो टर्मिनेट करता है पोस्टीरियर डिवीजन, इट टर्मिनेट्स एट द डिसेंडिंग जेनिकुलर nerve, descending genicular nerve. Okay, sir. Thank you. After it supplies the adductor magnus. चलिए, now the sixth one is arcuate popliteal ligament. Arcuate, ARCUATE, arcuate popliteal ligament.
this is a posterior expansion. This is a posterior expansion from short lateral ligament. Full stop. It extends backwards. It extends backwards from the head of fibula and arches, ARCHES, and arches over the tendon of popliteus, to be attached to the posterior border of the intercondylar area, posterior border of the intercondylar area of the tibia. Then number 7, cruciate ligaments. हमने जो आपको लिखवाए थे तो अलग अलग लिखवाए थे, एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. इसको बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि बहुत सारी नी जॉइंट की इंजरीज जो आप लोग देखेंगे could be related to the cruciate ligaments. Now cruciate क्यों नाम दिया गया? What is the meaning of cruciate? आपको मालूम है? Cruciate आपको बताया था? Cruciate in a cross manner. Sorry? Sir, in a arrangement in a cross manner. They cross each other like this. Now this is cruciate. Caesar. है ना? They are crossing across. ये this is a cruciate. तो एक होगा anterior cruciate ligament, एक होगा posterior cruciate ligament. The anterior crosses from medial to lateral, and posterior crosses from lateral to medial. Then they form. They actually bind the femur and tibia. So ये actually इनका connection होता है between the condyles of femur and the condyles of tibia. So because they cross each other like this, they are called as cruciate ligaments. लिख लीजिए, अभी बात करते चलेंगे हम लोग. और ये cruciate ligaments का attachment हम लोगों ने तब देखा था जब upper surface of tibia में intercondylar space थी ना, तो वहां पे 3 anteriorly और 3 posterior attachments थे. तो उनमें से C वाला जो पार्ट था, that was the cruciate ligament. चलिए लिख लीजिए cruciate ligament. Cruciate ligaments. They are
very thick. They are very thick and they are very thick and strong fibrous bands which act as direct bonds, bonds, bonds between femur and tibia. To maintain the anterior-posterior stability, stability, stability of the knee joint. They are named according to their attachment on tibia. They are named according to their attachment on tibia. पहला लिख लीजिए, anterior cruciate ligament. Anterior cruciate ligament. It begins from the anterior part. It begins from the anterior part of intercondylar area of tibia. It full stop. It runs upwards. Forwards and medially. It runs upwards, forwards and medially. Sorry. No. It runs upwards, backwards. Correct कर लीजिए please. It runs upwards, backwards and laterally. Upwards, backwards and laterally to be attached to the posterior part, of medial surface of lateral condyle
of femur. Full stop. It is taught. It is taught. Taught की spelling है T-A-U-T. T-A-U-T. It is taught during extension of knee. It is taught during extension of knee. Now, T-A-U-T. Taut का मतलब होता fully stretched. Fully stretched. किसी भी अगर आप इलास्टिक बैंड को पूरा स्ट्रेच कर लें, पूरे तरीके से खींच लें, तो आप फील करते हैं कि वो इलास्टिक न रह के सॉलिड हो जाता है, होता कि नहीं? तो इसी तरीके से जब ये एक्सटेंशन करते हैं नी का, तो ये बिल्कुल फुली स्ट्रेच्ड हो जाता है. It becomes fully stretched. That is the meaning of taut. T-A-U-T. Taut. अब लिख लीजिए posterior cruciate ligament. Posterior cruciate ligament. It begins from the posterior part. It begins from the posterior part of the intercondylar area, from the intercondylar area of tibia. Full stop. It runs upwards. It runs upwards, forwards, and medially. And is attached to the anterior part of lateral surface of medial condyle of femur. Medial condyle of femur. Full stop. It is taught during flexion of knee. Flexion of knee. Next line. The cruciate ligaments. The cruciate ligaments are supplied by middle genicular vessels and nerves. ये कई बार आ चुका है एज शॉर्ट नोट्स, और इसमें जो ज़्यादा इंजरीज आती हैं वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के आते हैं.
आप जब क्लिनिक्स में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे आएंगे आपको। अगर किसी ने सीटी स्कैन कराया है या एमआरआई स्कैन कराया है, तो जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल लेटर्स में ACL, ACL। तो अक्सर आपको जो रेडियोग्राफिक रिपोर्ट्स आएंगे तो अगर इंजरी है तो लिख सकते हैं ACL इंजर्ड। तो ACL है, अगर नी जॉइंट का है तो याद रखिएगा इट स्टैंड्स फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सिमिलरली पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अगेंस्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए PCL, PCL। इसकी इंजरीज रिलेटिवली कम होती है, रिलेटिवली कम होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग मेनिस्काई। मेनिस्काई, मेनिस्काई ब्रैकेट में लिख लीजिए सेमी ल्यूनर कार्टिलेज, सेमी ल्यूनर कार्टिलेज, SEMILUNAR, सेमी ल्यूनर कार्टिलेज। मतलब it looks more like half a moon, semi lunar cartilage। लिख लीजिए इनके बारे में। These are fibrocartilaginous discs, these are fibrocartilaginous discs, DISCS, and are shaped, SHAPED, and are shaped like crescents, and are shaped like crescents, CRESCENTS। तो सब they deepen the articular surface, they deepen the articular surface of the condyles of tibia, they deepen the articular surface of the condyles of tibia and partially divide, and partially, PARTIALLY, and partially divide the joint cavity, and partially divide the joint cavity into upper and lower compartments, into upper and lower compartments। अब ये जो दो कैविटीज में जो कंपार्टमेंट से डिवाइड हो जाती है ना, तो इनके दोनों अपर और लोअर कंपार्टमेंट्स के जो एक्शंस होते हैं ना, तो नी जॉइंट पे एक्शंस होंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या रोटेशन का, वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होगा। एक और जॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसी बात करना, एक और जॉइंट पढ़ा था जहां पे दो कैविटीज थी और दोनों कैविटीज में अलग अलग एक्शन होता था।
कौन सा जॉइंट था वो? कौन सा जॉइंट था जहां पे दो कैविटीज थी? फ्लेक्शन और एबडक्शन अलग होता था, एक्सटेंशन और एडक्शन अलग होता था, अलग अलग कैविटीज में। कम ऑन, याद करो जल्दी से, एलिमिनेट करो ना। शोल्डर जॉइंट में था ऐसा कहीं? एल्बो जॉइंट? सर एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ओके आयुषी, और कोई आंसर? एल्बो जॉइंट पे कहाँ पे दो दो कैविटीज थी यार? दो दो कैविटीज कहाँ थी? एल्बो जॉइंट में कहाँ दो दो कैविटीज है? और नीचे जाओ। अगर कभी आंसर ना आए, कभी आंसर ना, हाँ चित्रंजन, यस इट इज द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में एक 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 रेडियो कार्पल कैविटी थी और एक मिड कार्पल कैविटी थी ना, दो दो कैविटीज थी ना, और दोनों पे अलग अलग एक्शंस थे। इसी तरीके से ये भी जॉइंट कैविटी जो है, नी जॉइंट की जो जॉइंट कैविटी, अगेन दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट। चलिए आगे लिख लीजिए। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन takes place, flexion and extension takes place in upper compartment, and in upper compartment, while rotation takes place in the lower compartment, while rotation takes place in the lower compartment. Next line. Each meniscus has two ends. Each meniscus has two ends, both of which are attached to the tibia. Full stop. It has two borders. Comma. The outer border is thick. Convex, and fixed to the fibrous capsule, and is fixed to the fibrous capsule. Full stop. The inner border is thin, concave, and free. The inner border is thin, concave, and free. Next line. It has two surfaces. Full stop. Upper surface is concave.
for articulation of femur. For articulation of femur. Full stop. Lower surface is flat. Lower surface is flat and rests, R-E-S-T-S, R-E-S-T-S, and rests on peripheral two-thirds, rests on peripheral two-thirds of tibial condyle. Next slide. The peripheral thick part is vascular. The peripheral thick part is vascular, and inner part is avascular and is nourished by N-O-U-R-I-S-H-E-D, and is nourished by synovial membrane. And is nourished by synovial membrane. अब दोनों के अलग अलग देख लीजिए, जो मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस के बारे में लिख लीजिए. पहला हेडिंग डाल दीजिए, मीडियल मेनिस्कस. मीडियल मेनिस्कस. It is nearly semicircular. It is nearly semicircular, comma, being, B-E-I-N-G, being wider behind, than in front. Full stop. The posterior fibers of the anterior end, are continuous with the transverse ligament. Full stop. Its peripheral margin is adherent. Its peripheral margin is adherent to the deep part, of the tibial collateral ligament. Is adherent to the deep part of tibial collateral ligament.
Then lateral meniscus. Lateral meniscus. It is nearly circular. It is nearly circular. Full stop. The posterior end of meniscus. The posterior end of meniscus is attached to femur through two TWO through two menisco-femoral ligament. Through menisco-femoral ligament. Full stop. The tendon of popliteus and the capsule. The tendon of popliteus and the capsule separate this meniscus from fibular collateral ligament. Full stop. The more medial part of the tendon of popliteus, the more medial part of the tendon of popliteus is attached to the lateral meniscus. Then the functions of menisci. What are their functions? What are they there for? Number one, they help to make the articular surface more congruent. CONGRUENT. More congruent. Full stop. Because of their flexibility,
flexibility, they can adapt their contour, CONTOUR. They can adapt their contour. कॉन्टूर का मतलब होता है राउंडेड शेप. ये जो शेप होता है दिस इज कॉन्टूर. दीपक दीपक अपना दीपक माइक को बंद करिए अपना. दीपक क्लोज योर माइक. दीपक क्लोज योर माइक. दीपक दीपक अपने माइक को बंद करिए. दीपक अपने माइक को बंद करिए. हाँ तो ये वाला ना रिचार्ज है. दीपक अपने माइक को बंद करिए. करत रहा 1 महीना वाला 155. हाँ दीपक अपने माइक को बंद करिए. जियो फोन में रिचार्ज. दीपक अपना माइक बंद करिए. बेटा दीपक अपने माइक को बंद करिए. आप प्लीज अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन अगर आपको करने हैं तो आप ये क्लास छोड़ के जाइए और फिर से रिजॉइन कर लीजिए. बीच में मत किसी और से कॉन्वर्सेशन करिए. सबको डिस्टर्बेंस होता है. आप लोग अगली बार से इस तरीके से करेंगे तो हम हटा देंगे आपको क्लास से. यू हैव टू मेंटेन योर डिसिप्लिन. जैसे क्लास में करते हैं ये भी एक क्लास चल रही है. ध्यान रखिएगा. I will not tolerate this nonsense from any one of you. मैं इतनी देर से कह रहा हूं दीपक माइक बंद करिए, माइक बंद. वो बात करे जा रहा है. आपको क्लास में नहीं रहना, आप मत आइए क्लास में. चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. They adapt their contour to the varying VARYING to the varying curvature of different parts of femoral condyle as they glide, GLIDE, glide over tibia. एक वर्ड आया था कॉन्टूर. मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश. कॉन्टूर का मतलब था राउंडेड शेप. ये जो शेप होता है राउंडेड शेप जो होता है दैट इज नोन एज अ कॉन्टूर, CONTOUR. और यही वो शेप होता है जो femoral condyles का होता है. जो inferior part होता है इट्स शेप rounded like this. So this is a contour. Number 2, they serve as shock absorber. They serve as shock absorber. Number 3, they help to lubricate
the joint cavity. Number 4, because of their nerve supply, they also have a sensory function. They also have a sensory function. SENSORY. They also have a sensory function. Full stop. They give rise to proprioceptive impulses. They give rise to proprioceptive impulses. Proprioceptive ये वर्ड आ चुका है, पहले भी हम लोगों ने देखा था. Proprioceptive का मतलब होता है they give you that sense of pressure and depth and joint sense. That is proprioceptive. Then last is the transverse ligament. Transverse ligament. ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं. देखिए, अगर कभी कभी मुझे याद है एक बार पूरा सवाल आया था लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट, पूरा नहीं दिया, बट दे आस्क फॉर ऑल द लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट. कभी मेनिस्काई पे भी शॉर्ट नोट आ चुका है, क्रूशिएट लिगामेंट्स पे भी आ चुका है, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट पे भी आ चुका है, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, ये अलग अलग आज शॉर्ट नोट पे आ चुके हैं. तो ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपको मिलेंगे, आपके क्लिनिक्स में, आप प्रैक्टिस में, could be related to the knee joint. And then it is the shoulder joint, फिर lower back, intervertebral joint. इन जॉइंट्स को तो आप हमेशा पूरे तरीके से तैयार रहिए, पूरी एनाटॉमी इनकी, ताकि कभी भी मरीज आए आपके पास तो यू आर एबल टू डायग्नोज उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन है, एंड फिर आप उसका ट्रीटमेंट आराम से करा सकते हैं. हम हमेशा कहते हैं एवरी ईयर आपकी पहली गाड़ी, आपकी पहली कार नी जॉइंट से आएगी. नी जॉइंट इतने अच्छे तरीके से हमेशा तैयार रखिए कि कभी भी आपको इससे रिलेटेड पेशेंट्स आ सकते हैं. Then we come to the last ligament, transverse ligament. Transverse ligament. It connects the anterior ends. It connects the anterior ends of lateral and medial menisci. Then synovial membrane. Synovial membrane. Synovial membrane. It lines the capsule. It lines the capsule except posteriorly. Except posteriorly.
where it is reflected forwards, where it is reflected forwards by cruciate ligaments, by cruciate ligaments, forming a common covering, forming a common covering for both cruciate ligaments. For both cruciate ligaments. Full stop. In front, it is absent. It is absent from the patella. It is absent from the patella. Full stop. Above the patella, it is prolonged upwards. It is prolonged upwards for 5 centimeters or less, 5 centimeters or less, as the suprapatellar bursa, as the suprapatellar bursa. Next slide. Below the patella, it covers the deep surface. It covers the deep surface of infrapatellar pad of fat. Full stop. A median fold, M-E-D-I-A-N, a median fold, comma, the infrapatellar synovial fold, the infrapatellar synovial fold extends backwards from the fat to intercondylar fossa of femur. To intercondylar fossa of femur. तो ये हो गया लिगामेंट्स। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे टेंडन्स आ रहे हैं, लिगामेंट्स हैं, तो यहाँ पे बर्सी बहुत सारे होंगे। यहाँ पे
टोटल मिला के देर आर 13 बर्सा, 13 बर्सी हैं, 4 एंटीरियर, 4 लैटरल, 5 मीडियल. There are 13 bursae in this around the joint. Because such a large number of structures which are present here. So bursae लिख लीजिए, B-U-R-S-A-E, bursae. There are 13 bursae. There are 13 bursae, 13, around the knee joint. Around the knee joint. Around the knee joint. Comma, 4 anterior, 4 anterior, 4 lateral, and 5 medial. अब इनके नाम लिख लीजिए सबके. एंटीरियर के नाम लिख लीजिए, चार हैं, इनके नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4. Number 1 is subcutaneous prepatellar bursa. Prepatellar bursa. Number 2, subcutaneous infrapatellar bursa. Subcutaneous infrapatellar bursa. Number 3, deep infrapatellar bursa. Number 4, suprapatellar bursa. Suprapatellar bursa. ये तो 4 anterior bursae. Then lateral bursae. Lateral. Number 1, a bursa deep to a bursa deep to lateral head, of gastrocnemius. Deep to lateral head of gastrocnemius. Number 2, a bursa between fibular collateral ligament. A bursa between fibular collateral ligament and biceps femoris. Biceps femoris. सर रिपीट कर दीजिए. मैं कर रहा हूँ. Number 2, a bursa between fibular collateral ligament and biceps femoris. Number 3, a bursa between fibular
collateral ligament, fibular collateral ligament, and tendon of popliteus. Tendon of popliteus. Number 4. A bursa between the tendon of popliteus, between the tendon of popliteus and lateral condyle of tibia. ये हो गए 4 lateral bursae और ये सारे वही है, एक तो गैस्ट्रोक्नीमियस से बाकी सारे रिलेटेड विद द फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। उनके जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उसके साथ साथ उनको सेपरेट कर रहा है। देन मीडियल नंबर 1, a bursa deep to medial head of gastrocnemius. A bursa deep to medial head of gastrocnemius. Number 2, anserine bursa. Which is a compound bursa, comma, which separates tendons of sartorius comma, gracilis and semitendinosus and from the tibial collateral ligament इस बर्सा को थोड़ा सा पढ़ेंगे जब हम मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे आएंगे, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे आएंगे। एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको आप अलग से देख सकते हैं। इट्स अ कंपाउंड बर्सा जो इन तीनों टेंडन्स को एज वेल एज द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट को अलग, इट कीप्स देम सेपरेटेड। नंबर 3, a bursa deep to tibial collateral ligament. Number 4, a bursa deep to semimembranosus. A bursa deep to semimembranosus. Number 5, bursa present sometimes between tendons of
semimembranosus. सर वॉइस नहीं जितना आ भी रही आज आपकी। हम जितने भी नहीं आ रही, हेलो, आनी चाहिए मेरे रिकॉर्डर पे तो आ रही है। सर रिपीट कर दीजिएगा। आ रही है आवाज? सर रुक रुक के मेरी आ आवाज रही है। सर आपकी आवाज फ्लक्चुएट हो रही है बार बार। आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा। वन कल की क्लास। आज हम इसको क्लास को बंद कर रहे हैं और अगेन हम आप लोगों से ये कहते हैं, अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क यूज करिए अगर कहीं आपको जाना है बाहर, इफ एट ऑल यू हैव टू गो आउट, डबल मास्क यूज करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइजर यूज करिए और हैंड वॉशिंग एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार में सबका ध्यान रखिए। एंड we'll meet again tomorrow. We'll end the class today. Okay?